It is D-Day and it could not get bigger than this as India take on World Cup royalties Australia in a mega final at the iconic Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. While India start overwhelming favorites, they cannot take resilient Aussies very lightly in this match. Also, the question would be, can India bury the ghosts of Joburg 2003? We are going to discuss all of that on Off the Pitch with Ankit on India.com and also preview the match at length. And to do that, we have with us joining at this point of time Biswajit Jha, who's an ex-sports editor and an author. We have Sunny joining us at this point of time. And in some time, we'll also be having Sushant joining us. Utkarsh is there. And also we have Rishabh Malakar, who's a MS Dhoni doppelganger. So he'll also be joining us on this session. Without wasting any time, Biswajit, I'm going to start with you. Biswajit, Rohit Sharma came out. He made a press conference yesterday, and it was his usual casual self at the press conference. But you know what was the big takeaway for me from the press conference? It was the fact that Rohit Sharma said that anybody from the 15-member squad can be in the side. Now they have used heavy rollers yesterday, is what we understand. If that is the case, क्या आपको लगता है आज अश्विन खेलेगा 11 में अश्विन का जगह बनता है in place of Siraj, or we are going to stick to the same 11 which has been playing for the last 6 games? Biswajit, opening remarks. Yeah. Ankit, actually, technically, 15 members are there in the squad, so you can Rohit Sharma and Rahul Dravid can select any of the 15 players in the playing 11. So in that respect, it's true, but I don't think that there will be any change in the Indian squad because they have been playing relentless cricket throughout this whole tournament, and they have just one match to go right now. This is the big match, but they are taking this match as yet another match of this क्या World Cup. आपको लगता है विश्वजीत रोहित शर्मा माइंड गेम्स खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच से पहले? ये एक टैक्टिकल मूव था, अ वेल Yeah. कैलकुलेटेड मूव. Yeah, it was a tactical move. Why should he reveal his playing 11 and help Australia to understand the game of the Indians? So he will keep the whole Australian team guessing about their final 11. If they want, they should also prepare for Ashwin. And the cards are Rohit Sharma is keeping the cards close to his chest. But I don't think there will be changes in the playing 11. सनी, आपसे मैं सेम सवाल पूछना चाहता हूँ. रोहित शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद लगा रोहित शर्मा थोड़ा सा चतुर होने का कोशिश कर रहे हैं. बट हमें पता है, एंड आई एम श्योर सनी तुम भी ये बात मानोगे, कि किसी को नहीं लगता है कोई विनिंग कॉम्बिनेशन आखिरी मोमेंट पे आके चेंज होने वाला है, क्योंकि पूरा जो टीम का एक लय है वो बदल जाता है. क्या आपको लगता है रोहित शर्मा माइंड गेम्स खेल रहे थे? अंकित, रोहित शर्मा ने पहले भी खेला है। याद होगा आपको वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग में जब शुभमन गिल को डेंगू हुआ था, तो रोहित शर्मा ने प्रेशर के अंदर बोला था कि सुबह तक हम शुभमन गिल को खिला सकते हैं, हमें नहीं पता। तो ये रोहित शर्मा ने सेम ऐसा ही एक स्टेटमेंट अब दोबारा दिया है कि हमें नहीं पता, 15 में से कोई भी खिलाड़ी खेल सकता है, वो 15 में से अश्विन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली अभी अपनी प्लेइंग 11 रिवील करने का तो ऑस्ट्रेलिया को क्यों मौका देना है अपनी प्लेइंग 11 के अगेंस्ट अपनी टीम लेकर आने का? तो रोहित शर्मा ऑब्वियसली माइंड गेम्स खेल रहे हैं और चीजों को घुमा रहे हैं, तो अपोनेंट गैस ही करता रहे कि अगर अश्विन आ गया तो ये कॉम्बिनेशन होगा, सिराज होगा तो ये कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन आई डोंट थिंक कि अब प्लेइंग 11 को चेंज करने का कोई सेंस या फायदा बनता है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन ने कहीं पे स्पिनर की विकेट होगी, वहां पर हमें पेसर्स ने भी विकेट दिलवाए हैं और पेसर्स बहुत अच्छे से विकेट दिलवा रहे हैं। ये मैं धोनी के एरा के बाद अब पहली बार देख रहा हूँ, ये सॉरी कोहली के एरा के बाद अब देख रहा हूँ। कोहली ने ये स्टार्ट करा था मुहिम की पेसर्स को ज्यादा मौका देना चाहिए, और अब मैं देख रहा हूँ कि रोहित शर्मा इसी मुहिम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कामयाब होते जा रहे हैं इसके अंदर। तो आई डोंट थिंक कि अश्विन को आज के मैच के अंदर लेकर आना चाहिए, और लेके भी आओगे तो किसे हटाओगे, सिराज को? आई डोंट थिंक कि सिराज को हटाना चाहिए। ऋषभ, देखो लास्ट टाइम जब इंडिया ट्रॉफी जीता था, धोनी वाज एट द सेंटर ऑफ इट ऑल. वो धोनी का जो लास्ट छक्का था वो कोई भूल नहीं सकता है. क्या आपको लगता है आज फिर से वो पल आएगा? 12 साल बाद इंडिया वर्ल्ड कप उठाएगा, सेम मतलब घर पे ही उठाएगा इन इंडिया? क्या आपको लगता है ऋषभ? या अंकित, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि लास्ट टाइम भी जैसे माही सर ने छक्का मार के मैच जिताया, तो ये छक्का का तो मैं कुछ बोल नहीं सकता. आई थिंक सो कि इंडिया ही मैच इस बार भी जीतने वाला है, वर्ल्ड कप हम मिलाने वाले हैं. लास्ट टाइम भी जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा लास्ट मैच था उसमें इंडिया 350 प्लस करने का मैंने बोला था, यही है. तो मेरा प्रेडिक्शन यही है कि इंडिया वन द मैच.
Right, 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 right. Uh, Biswajit, I want to find out from you. Is this probably the best 11 fielded in a World Cup after the turn of the decade? After the turn of the century, I'm so sorry. So there is the Yeah, yeah, yeah. 2003 Australian team, there is the 2007 Australian team, there is 2011 Indian team, there is 2015 the Australian team, then there is the English side, and now do you think the Indian 11 is the best World Cup squad fielded after the turn of the century? And I'll ask you to compare it with the 2007 Australian team, where most of the players, the batters, the top five or the top six, all of them were averaging more than 65. ये लगभग इंडिया जैसा सिनारियो है जहां पर इंडिया Yeah, के yeah. अधिकतर प्लेयर्स चल रहे हैं. This is the team comparable only to the team of 2003 Australian team which won the World Cup and 2007 Australian team which won the World Cup. But mind you, Ankit, this is the best ever Indian ODI team. I have no doubt about it. Whether they win the trophy or lose the match, I don't know. But this is the best ever ODI team I have ever seen in my life from 1992, from when I started watching cricket matches for India. And also So, one more thing, just say yes or no. Is this the best three mhm. pacers to have played for India ever? Biswajit. Uh, at a time, they are the best because India has have like better pacers also. Like Kapil Dev was there, Zahir Khan was there. At one point of time, Ishan Sharma also bowled well. So in that respect, I think that at a time in the playing 11, they are the best combo of three pacers. It's a dream for Indian team. I started watching Indian team from 90s. I had this kind of dream that one day India would field three top class pacers who will dismantle the opposition, and this is a dream Who are the coming true for closest? Who me. are the closest? Who are the closest to come to Siraj, Shami, and Bumrah? Who are the closest? Javagal Srinath, Zahir Khan. Who are the three pacers from India who have played together in one team? Come closest to these three nowadays: Siraj, Shami, and Bumrah. Biswajit. Look, in the 2003 World Cup, Srinath, Zahir Khan, and Agarkar, they may be closer to these three pacers, but they are like way behind them. But these three players, they are way above them. I think in every aspect, in their quality bowling, line length, skill, everything. मतलब वो कंपेयर ही नहीं हो सकता. ये मैं नहीं देखा, मैं बोल रहा हूँ. तो एक चाइल्डहुड ड्रीम था अंकित, तुम्हारे भी होगा, सानी सानी का भी होगा. मैं पहले से देख रहा था. पहले तो थर्ड पेसर ही हम लोग कभी फील्ड नहीं कर पाते. श्रीनाथ और प्रसाद आया, फिर थर्ड पेसर जो इंडिया टीम के अभी कोच है परश मामरे, ये सब बहुत सारे प्लेयर्स को चांस दिया गया था, बट कोई उस टाइप के मतलब वो इम्पैक्ट नहीं कर पाया. तो ये जो ड्रीम देख रहा हूँ मैं आंखों के सामने, मैं कभी सोचा ही नहीं थी इंडियन पेसर्स. मैं पाकिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया का हम लोग देख के हम लोग को आदत पड़ गया. मैं बोल रहा हूँ अंकित, ये टीम है. मैं लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी बोला था कि इंग्लैंड टीम इतना अच्छा है, जो सानी मेरे को बोल रहा था कि आप जिता दे. मैं नहीं जिताया, टीम खुद जीतता है, मैं बोलने से कुछ नहीं होगा. तो ये टीम भी मतलब आज ये टीम ना जीत पाए अंकित, ये बहुत बड़ा मतलब एक वो होगा. जैसे जैसे मैं बोला ना, जैसे अफगानिस्तान इंग्लैंड को हरा दिया, ये जैसे एक वो है ना, ये जैसे एक हमारा अपसेट था. और सपोज ये भी एक अपसेट होगा, नीदर सोचो. हाँ ऑस्ट्रेलिया अगर जीत गया इंडिया से, वो अपसेट होगा. ये सोच के भी अजीब मैं लगता है. ये बोल रहा हूँ कि ये टीम इतना अच्छा है अंकित. ये सुन के बहुत लोग हो सकता है क्वेश्चन करे, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि नीदरलैंड्स ने भी जो साउथ अफ्रीका को हराया, नीदरलैंड्स डिफीटेड साउथ अफ्रीका, उससे भी बड़ा अपसेट होगा इफ ऑस्ट्रेलिया बीट इंडिया टुडे. But we cannot surely take Australia lightly. These guys, they are या World या Cup royalties. They have won the tournament 5 times, and this is probably their eighth final, I think. तो फाइनल यस यस पहुंचना यस इज अ रेगुलर थिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया. इंडिया के लिए थोड़ा सा अलग है, बट ऑस्ट्रेलिया या का या हर एक टीम, हर एक बैच ऑफ और प्लेयर्स और अंकित फाइनल्स ये तक पहुंच ही जाते हैं. माइंड गेम भी खेल रहा था कमिंस. कल कल क्या बोला कमिंस ने, मेरा 2015 वर्ल्ड कप जो हम लोग जीते, इसके 8 प्लेयर है ऑलरेडी. रोहित शर्मा भी बोला हमारे भी कोहली है, अश्विन है. और रोहित शर्मा जो बोलने के भूल गया, मैं सोच रहा 2007 में मैं भी वर्ल्ड चैंपियन था. तो मैं मेरे हम लोग भी फाइनल और इससे, हाँ, ऑफ लेट 15 से आफ्टर 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हमारा थोड़ा, लेकिन हम लोग फाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल में पहुंचे. और इंडिया टीम के जो प्लेयर है ना, वो फाइनल खेले, जब भी खेले,
प्रेशर लेके ही झेलना ही है। तो प्रेशर अलग से है, प्रेशर झेल नहीं पाता, देखो ये देखो ऑस्ट्रेलिया देखो से ज्यादा सनी प्रेशर सनी है। राइट 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 Sunny, exactly. I agree with Biswajit. Couldn't agree more with Biswajit over here. When Biswajit says that, Sunny, this Australian team, they have been over here in this situation many a times. So there is nothing new for them. और प्रेशर देखा जाए तो इंडिया के ऊपर होगा, बिकॉज सब ये लगभग मान मान के चल रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है. So I feel the pressure will actually be on India more than Australia. ऑस्ट्रेलिया जाके आराम से खेल सकता है. एंड विश्वजीत वाज टॉकिंग अबाउट पैट कमिंस, डूइंग सम प्लेइंग सम माइंड गेम्स. तो कल पैट कमिंस ने ये बोला शायद हम लोग ग्रुप स्टेज वाला मैच इंडिया के साथ जीत जाते अगर वो कोहली वाला कैच ले लेते. तो ही मेड दैट स्टेटमेंट. दैट्स अ बिग स्टेटमेंट जहां पर पैट कमिंस बोल रहे हैं हम तो इंडिया को आराम से हरा सकते थे उस दिन. राइट. तो सनी, व्हाट डू यू बिल्कुल। मेक अप पैट कमिंस, द ऑस्ट्रेलियन टीम, देयर सेटअप इन गोइंग इनटू द फाइनल? अंकित अंकित यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रेशर इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर होगा, क्योंकि इंडिया हमारी एक अकेली ऐसी टीम है जिसने सारे अपोनेंट्स को बोल्ड आउट करा है, और अकेली ऐसी टीम है जिसके पास हाईएस्ट रन गेटर है, हाईएस्ट विकेट टेकर है। शामी की आप बॉलिंग देखोगे, उनका जैम्पा हाईएस्ट विकेट टेकर है, लेकिन कितने मैचेस खेले और कितने रन दिए हैं। उधर से हमारे पास शामी है, शामी हमारा हाईएस्ट विकेट टेकर है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, हमारे पास जडेजा तक बैटिंग है। और इंडियन पिचेस पर जडेजा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर गिल। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे, काफी सारे कॉम्बिनेशन है, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा प्रेशर में होगा इस गेम के अंदर। और 1,30,000 फैंस की बात तो मैं भूल ही गया बोलना। तो 1,30,000 फैंस जब ब्लू पहन के आएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को लोग डोमिनेट करने वाले हैं। Okay, so as you can see, we are playing up a few graphics over here. You can see who are the highest wicket takers in this tournament. Mohammad Shami, who has played 4 less games compared to the rest, is still leading the charts with 23 wickets. There is Adam Zampa at 22. So yes, there is going to be a face-off between Mohammad Shami and Adam Zampa for the highest wicket takers list ऑफ द टॉप। today. Then on the third position we have Dilshan Madhushanka, who has also had a fairly a good tournament in the absence of some big names in Sri Lanka. Dilshan has stood up and he's come good. He's picked up 21 wickets. Gerald Coetzee, you can actually call him the breakaway star this season. The South African has picked up 20 wickets and he looks pretty promising as a prospect for the future. And then you have India's premier pacer Jasprit Bumrah with 18 wickets. So yes, there are two Indians in the top 5. That also shows India's domination, right? With the bowling. And if I could ask my producer to also play up the leading run getters Yeah, chart, yeah. you can see that Virat Kohli is leading the charts. And we also have a couple of Rohit more. Sharma is Okay, there. we have Rohit Sharma there. So there are 5. You have Virat Kohli leading the chart with 711 runs. He has broken n number of records this season. At number 2, you have Quinton de Kock, who has scored 594 runs, and he too had a very good season. Unfortunately, South Africa had to bow out in the semi-finals against Australia. Then you have Rachin Ravindra. Rachin Ravindra, he's also had a dream season. The guy is usually known for his bowling exploits, came good with the bat as well. He has scored 578 runs. And also, I believe, and a lot of others believe, that he could actually break the bank at the IPL auction this season. Then you have Daryl Mitchell, somebody who nearly pulled off a heist against India the other day in the semi-final. So yes, Daryl Mitchell has 552 runs, and then you had Rohit Sharma, the Indian captain. अब क्या लगता है उत्कर्ष, इन पांचों में से, और बोलर्स का लिस्ट भी आपने देखा उत्कर्ष, आपको क्या लगता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिलना चाहिए? आपका वोट किसके लिए होगा उत्कर्ष, और क्यों? सी फॉर ऑफ कोर्स, क्यों? सी मेरे लिए तो आई फील कि मोहम्मद शमी को होना चाहिए, बिकॉज उनने 6 गेम्स खेले और जब से वो इंडियन प्लेइंग 11 में आए उनने बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट दिया है। कोई सी भी उनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही होगी जहाँ पे उनने इंडियन टीम के लिए कंट्रीब्यूट ना करा हो। ठीक है, विराट कोहली यहाँ पे लीडिंग रन स्कोरर है, बट हमने मोहम्मद शमी का देखा, हमने न्यूजीलैंड वाले मैच में भी देखा था कि जो अदर बॉलर्स थे वो मतलब ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, विकेट्स नहीं ले पा रहे थे। बट उनने केन विलियमसन की भी कैच छोड़ी, उसके बाद उनने जब वो रिटर्न बॉलिंग में आए तो उनने वहां पे 2 विकेट्स भी ली, तो उसकी वजह से वहां पे मैच चेंज हुआ। हमने फर्स्ट मैच में भी देखा था जब न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें धर्मशाला में 5 विकेट्स लिया था। फिर सिर्फ एक नीदरलैंड्स वाला मैच था जहाँ पे उन्हें अच्छा परफॉर्म नहीं करा था, बाकी कोई सा भी एक ऐसा मैच नहीं रहेगा जहाँ पे हमें उनकी परफॉर्मेंस ना क्लिक करी हो। रही बात विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करा है, 5 हाफ सेंचुरीज है, 3 सेंचुरीज है। तो मे बी ये थोड़ा सा टॉस अप रहेगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में कि विराट कोहली या मोहम्मद शमी में से किससे मिलेगा ये। Mohammad Shami or Virat Kohli? And I think most of us will agree with this. Biswajit, who's going to be your player of the tournament and why? And why aren't we talking about Rohit Sharma?
Look at the impact he has created at the top of the order. Because once you create that impact, maybe you're just getting 40 or 50, but the impact you create, the others they reap the rewards with that. So why not consider Rohit Sharma to become the player of the tournament? Biswajit. No, Utkarsh is spot on in saying that either Virat Kohli or Shami. Look, Ankit, like impact is obviously there, but for me, Rohit Sharma is the player of the match, player of the tournament. Sorry, Rohit Sharma is the player of the tournament, but the jury will finally select who will be the player of the tournament, and I think they will select either Virat Kohli or Shami, and Utkarsh is spot on. But for us, for many former cricketers, Rohit Sharma is the player of the tournament if India Lift will the trophy. go on to win the trophy. हाँ. So मेरे को लगता है कि आप ठीक बोले हो और एक चीज मैं जब बैटिंग चार्ट देख रहे थे बॉलिंग में एक ऑस्ट्रेलियन है बैटिंग में कोई नहीं है अंकित ये भी ऑस्ट्रेलिया एग्जैक्टली ये भी देखना पड़ेगा कोई भी दो दो न्यूजीलैंड के हैं और मिशेल तो बट दो इसका सौ साठ मतलब ये इंडिया नहीं है कि डेविड वार्नर इसका मतलब ये नहीं है कि डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल को हम लोग हल्का नहीं में ले कुछ सकते हैं. मतलब एंड नहीं डू नॉट हल्का फॉरगेट में देयर नहीं इज है आल्सो स्टीव स्मिथ एंड मार्नस लाबुशेन. but they have been not firing. They have not been firing. This is the main issue for Australia. And if and the way Indian bowlers are bowling, Okay. Kapil is there, so we can. Biswajit, I would just like you to hold your thoughts for a minute. We have Kapil Vashish joining us from Ground Zero in Ahmedabad. I think he's just standing outside the Narendra Modi Stadium. Kapil, कल रात से लोग घर ही नहीं गए हैं. मैं देख रहा था 2 बजे भी लोग हैं उस स्टेडियम के बाहर. ये क्या कुछ मेला लगा है? क्या चल क्या रहा है कपिल? पूरा माहौल सही है अंकित कपिल. भारत में जो क्रिकेट होता है और ये तो वर्ल्ड कप है और ऊपर से वर्ल्ड कप का फाइनल है तो ये मेला समझ लीजिए उत्सव समझ लीजिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन समझ लीजिए इससे बड़ा और कुछ नहीं है और अभी 100 ओवर खेलते जाने बाकी है अभी मैच होना बाकी है लेकिन फैंस की जुबान पर सिर्फ एक शब्द है ये ट्रॉफी तो आज रोहित शर्मा ही उठा रहे हैं और एक जाना पहचाना चेहरा आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा जो पहले डुप्लीकेट होते थे लेकिन टीम इंडिया का ओरिजिनल क्रिकेट दिखाई दी इनको जानते हैं क्या लग रहा है आपको फाइट होगी या वन साइड जीतेगी किया है कि इंडिया ही जीतेगा और इंडिया जीतेगा तो 101 की अभी सूरत से आएंगे तब और मैं मुमकिन की कोई और हमारे आज अमित जी भी आने वाले हैं तो वो पक्का नहीं मतलब 90% आज आ जाएंगे सर तो देखिए उम्मीद यही है कि जैसा क्रिकेट हमारी टीम ने पूरे वर्ल्ड कप में खेला है जो टेम्पलेट सेट किया है जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमने खेला है जो के साथ वैसा ही क्रिकेट हमारे भी हम खेलेंगे और रोहित शर्मा को एक बात बोल रहे हैं कि टॉस अगर आप किया तो पहले बैटिंग प्रेशर मैच है और 6 रन को नहीं कर रहा है आज के दिन हमारे बॉलिंग अंदर बनाई अच्छा मूव कर रही है टॉस जीतिए बैटिंग करिए 350 बनाइए मैच जीतिए भारत माता कपिल कल रोहित शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने थोड़ा बहुत हिंट दिया कि शायद अश्विन खेल सकते हैं. ऑब्वियसली नाम नहीं लिया अश्विन का, बट उन्होंने बोला 15 में से कोई भी खेल सकते हैं. और हमने देखा कल हैवी रोलर्स पिच पे चल रहा था. कल और परसों हैवी रोलर्स चल रहा था. और जब हैवी रोलर्स चलते हैं हमें पता है पिच स्लो हो जाता है, स्पिन को ज्यादा फेवर करता है. तो आपको लगता है ऐसा हो सकता है अश्विन खेले आज? हम सब ऑब्वियसली हम सब चौंक जाएंगे. कपिल, व्हाट इज योर हार्ट? कुछ पता लगा है अंदर से? ठीक है अगर अगर ऐसा होता है तो अपनी परफॉर्मेंस होगा तो आपको वो आपको रिजल्ट करेंगे दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि इसका बड़ा कोई फैक्टर कि आपको टीम के लिए खिलाड़ी पड़ेगा जडेजा और कुलदीप कोलकर भी इस्तेमाल करते हैं भी तो भारी पड़ेंगे खेलने और तीसरा ये तो मुझे लगता नहीं कि अश्विन इस मुकाबले में खेलेंगे रोहित शर्मा ने थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का जो माइंड गेम खेल दिया है मुझे ऐसा लगता है इसमें थोड़ा सोचेंगे कि इंडिया क्या करने वाली है मुझे लगता नहीं है मुझे लगता है कि वही टीम खेलेगी जो लगातार जीतेंगे और 5 तेज करते हुए और अगले 5 मिनट डिफेंस करते हैं डिफेंस और हमारे साथ है उनसे जानते हैं क्या तैयारी है इंडिया का बड़ी अच्छा है तो ऐसा सिचुएशन तो नहीं
कोई टेंशन नहीं ना भाई, विराट है हमारे पास और सबसे बड़ी बात हमारे रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस, मुंबई का राजा रोहित शर्मा, वंदे भारत माता की। गली गली में टाना जाने विकेट के पीछे कंगारू लगा खोदे, इसी तरह बात जीतेगा इंडिया, जीतेगा ऑस्ट्रेलिया का बाप इंडिया। तो देखिए जो फीलिंग है कि रोहित शर्मा इस कप को उठाने जा रहे हैं, जो मुकाबला खेला जाना बाकी है, लेकिन कमाल का क्या है मुकाबला बहुत अच्छा होगा। नरेंद्र मोदी के स्टेडियम में मुकाबला बहुत अच्छा होगा। आप देख सकते Bap re bap, there is a sea of blue in Ahmedabad, as you can see, guys, just outside the stadium. और यही माहौल कल रात से है। बिल्कुल देखिए अभी अभी एनसीसी में उनको थोड़ी देर पहले और लोग अंदर जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन जिस तरह कपिल, ये जो क्लोजिंग सेरेमनी है, कपिल, ये जो क्लोजिंग सेरेमनी है, इसके लिए भी तो काफी रोमांच है। कल से 2 दिनों से रिहर्सल्स चल रहे हैं, कैसा लग रहा है? आपने तो देखा भी होगा आंखों के सामने। सबसे बड़ा जो शो होने वाला है ना, वो मेरे ख्याल से टॉप के बाद से होगा, 1:35 से लेकर 1:50 से 45 तक 12-15 मिनट पूरे तरह से जो हमारी टीम है, भारतीय वायुसेना की है, स्टेडियम के इतने करीब से वो लोग निकल के जाते हैं फाइटर जेट हमारे, तो इसका एक अलग हो रहा होता है। वो जो आवाज होगा, वो जो रोमांच होगा, मुझे लगता है वो ठीक होगा इस पूरे आयोजन का। और हमारे में क्रिकेट हम खेलेंगे तो बहुत हमारी तस्वीरें भी आप इन सबको देखने को मिलेंगी। कपिल, I wish you all the best. कपिल, I wish you all the best. हमें लग रहा है आज शाम तक पूरा अहमदाबाद और पूरा इंडिया विला विला हो जाएगा। अलग क्रेज है कपिल, अलग क्रेज है। Thank you for providing us all the report from ground zero. I also wanted to wish him belated happy birthday, but I could not. He's quite a busy person. Okay, making a debut on India.com is DNA editor Sushant Mohan. Thank you for joining us on this session, Sushant. I also know that you are an avid cricket follower and you also play cricket over the weekends. क्या लग रहा है? The stage is set. India is going to lift the crown. There are going to be no hiccups at all, Sushant. Of course, not at all. I mean, when you are saying that I am an avid cricket fan, then there are no questions asked. I think the team will going to lift it up. And thank you, Ankit, for allowing me to join this. I think it's a brilliant show you guys have put up. I've seen Biswa before, Sunny also, and Ankit as well. And thank you so much for allowing me to join this team, this mad bunch. And Likewise, I also wanted Sushant, to likewise. I also wanted to thank Kapil. You know, he was looking. I thought that some player has joined us, so I was about to पूरा ask my feel दे question. देता है कपिल from ground zero. Yeah. Yeah, So Sushant, it's I I asked think a very I, pertinent. yeah. Sushant, I asked a very pertinent question to Biswajit over here and Sunny. I told them that Virat Kohli is the leading run scorer this season. Shami is the leading wicket taker this season. But Rohit Sharma's impact has been next level. As a leader, as the batter, as the opener, he has been getting us off to starts, which has helped us win matches, and it has also allowed the others to take their time in the middle, get their eye in, and then open up. So, can't we actually consider Rohit Sharma as a good candidate to become the player of the tournament, Sushant? I think, see, that's a big ask. If you'll ask me, see, we have better candidates. Even I was reading this story. This very good friend of mine wrote for Hindustan Times, and I was reading this story. They were vouching for and calling it for Kuldeep Yadav. So asking it for Rohit Sharma, see, he's a great player. He has come out as a great captain, and I was really missing Dhoni since long, but now he has come to his colors, and now he has filled in the shoes. So I think he has done his job pretty well. But
knowing the BCCI system, knowing the ICC point system, I know it'll go to someone else. So I don't want to put fake hopes. Rohit, yes, for me, he's a great player and a great captain for sure. Captain of the tournament, yes, Rohit Sharma. But if you would ask me, player, I still have my doubts on that. No, because he's been getting us off to cracking starts, and that has been helping us, create that impact up early against the opposition. जहां पर हम लोग एक खौफ पैदा कर देते हैं, you're shocking the opposition. Opposition एक प्लान लेके आता है, and रोहित जिस तरीके से बल्लेबाजी करता है, all the plans go for a toss. That is why I asked, why not consider Rohit Sharma as the player of the tournament? Sushant, Ankit, no also I doubt. would I like think what he has done is pretty important. And Rohit अपनी जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो पहले सहवाग ने किया था, सईद अनवर करते थे पाकिस्तान के लिए, और निक नाइट और ट्रेस्कॉथिक करते थे इंग्लैंड के लिए. तो what he has done it well, and nothing can take the credit away from him. He has done a great captaincy, and of course the starts he has been given. तो उनके दिए हुए स्टार्ट की वजह से ही विराट या केएल राहुल या श्रेयस अय्यर बाद में आके कैपिटलाइज कर पाते हैं. तो वो मेंटल ब्रेक कर देते हैं सामने वाली टीम का, और अगर आज भी वो ऐसा करते हैं तो आई एम श्योर ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत खराब दिन होने वाला है. Sushant, Yeah, when you yeah, look very, at very the true. social media, Sushant, when you look at social media, people are calling the Indian pace trio of Siraj, Shami, and Bumrah as the greatest of all times, GOAT. Can you compare this Indian pace trio with, is this the best Indian pace trio fielded in an ODI 11 ever? Ankit, if we are not in a hurry, I think Biso wanted to add something. So let's allow him, and then we come Yes, to yes, this yes, question. He please. wanted to say Yeah, something. yeah, you're right. Right, No, no, right, no. Ashwini. You can continue answering this question. Then we can. I was about to say that like more than 1 month we have been doing this show, and it was a really very interesting show. I will miss from tomorrow, or maybe tomorrow we'll do one Biswajit, show, and I and want then to tell all our viewers, this is Off the Pitch with Ankit, and we'll be continuing this every day at 11 yeah. o'clock. But World Cup we'll miss. We have just come to the Of fag course, end of we'll be this World missing the Cup. World Today is Cup, Yeah. but the there's lots yeah, to look yeah. forward to. There is ये lots एक to look हैबिट बन forward गया to. है. या हैबिट बन गया है मेरे को भी. वर्ल्ड कप. तो कल से मेरे को लगता है वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, और ये शो इतना अच्छा रहा हमारा. मतलब अंकित ने इतना अच्छा वो किया, होस्ट किया ये शो. मैं एक टाइम मैं भी जी में था, तो मेरा भी एक मतलब लगाव जी से है ही. I तो आई guess, वाज guys, देयर. I guess we are digressing a little over here. Sushant, let's stick to the match. I would like to ask you, Sushant, the question I asked you about the three Indian pacers. Can you compare it with any other trio and Indian pace battery of the past? Maybe because you've been following cricket for quite some time, I think 3-4 decades. So You want me to compare them with the Indian pace batteries? I think I would like to minus Siraj out of it. I think he still has more to learn, and I mean he's a great bowler. I'm no one to say that he's not a great bowler or he has not contributed well. But if you would ask me, goat, that's because that's a big deal. I remember Srinath and Prasad, and they coming up with Irfan Pathan, Balaji, and Zahir Khan. So I remember these people bowling, and they've done tremendous spells in their during their times. They've done their bowling. They've played test like veterans. So I don't think so that saying that this is the goat. But yes, अगर World Cup की बात करें, if you will ask that this is वर्ल्ड कप में इससे अच्छा ट्रियो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी समय पे इससे अच्छा ट्रियो हुआ है. हालांकि मैंने कहा फिर से दैट सिराज की बॉलिंग को लेकर मेरे अप्रीहेंशंस रहेंगे. अभी उन्हें बहुत सीखना बाकी है, उनमें बहुत क्रिकेट बाकी है, और या ऐसा नहीं है कि वो खराब बॉलर है, उनमें बहुत क्रिकेट बाकी है और वो बहुत सीखेंगे. जहीर, इफ यू रिमेम्बर, जहीर का एक वर्ल्ड कप खराब गया था और फिर अगले वर्ल्ड कप में वो वर्ल्ड कप जिताने वाले बॉलर बने थे. तो ये होता है. और मुझे जहीर, इरफान पठान और बालाजी वाली जो ट्रियो है वो याद आती है. तो ये बट शमी ने जो किया है इस वर्ल्ड कप में, और अगर शमी अगला वर्ल्ड कप, एज उनकी तरफ है, अभी वो 33-34 पार कर रहे हैं, तो अगर वो अगला वर्ल्ड कप खेलते हैं और ये ट्रियो वहां रहता है, ये फिटनेस बना के रखते हैं. बुमराह का थोड़ा सा फिटनेस का इश्यूज आने लगे हैं. अगर ये फिटनेस बना के रखते हैं और अगले वर्ल्ड कप में ये तिकड़ी बॉलिंग करती है, अंकित, आई एम टेलिंग यू, देन गोट नहीं, ये गोट से ऊपर जो भी वर्ड होता है वो आपको बनाने के लिए मिलेगा.
That is Sushant. I feel what you're saying is pretty far fetched. Let's just talk about today, this Sunday. Hopefully, we lift the trophy. Biswajit, what was interesting was लीग गेम्स में जब ग्रुप स्टेज गेम्स था बिस्वजीत, तो हम आके अटैक कर रहे थे, ज्यादा कुछ डर नहीं था हमारे मन में. वी वर जस्ट अटैकिंग, प्लेइंग फ्री फ्लोइंग क्रिकेट एंड ऑल दैट. बट जहां सेमीफाइनल्स आया, नॉकआउट स्टेज, वी आर प्लेइंग न्यूजीलैंड. मुझे लग रहा था क्या रोहित शर्मा और रोहित शर्मा के जो खिलाड़ी धुरंधर है, वो वही अटैकिंग रुक मतलब they'll continue that. And मुझे I was a little apprehensive about this. मुझे लग रहा था they may be a little cautious, semi-final stage है, but to see them come out and express themselves like they did was pretty heartwarming. आपको क्या लगता है बिस्वजीत, the same template is going to continue today? बिस्वजीत. Yes, yes, yes. Yes, yes. They have been doing this and they have been successful in doing all this. And मेरे को लगता है मैं जिस हिसाब से ये लोग देख रहे हैं, yet another match. Not seeing as semi-final or final. Yet another match. We have been playing good. We have been playing with the same template of attacking the opposition out. And I think that they will play as yet another match because Rohit Sharma knows how to relax not only for himself but for the team. And he is a great captain to lead India into a final. I think that his attitude, his You're relaxed expecting, approach, see, I his very yeah, personally, yeah, Biswajit, personally, if you ask me, I think India is making no change. Do you think Australia is going to make a change? Not a forced change, of yeah, course, but do you Australia, think Marnus Labuschagne goes out, they add a little bit of power in the middle order, gets Stoinis back in, the guy can also bowl, he can roll his arms over. You think that change can happen or it won't happen? नहीं मेरे को नहीं लगता है अभी ऑस्ट्रेलिया भी कोई चेंज करेगा स्पेशली आफ्टर साउथ अफ्रीका को हराया मतलब देखो सेट टीम जो अच्छा टीम है वो सेट टीम ही खेलेगा मेरे को ऑस्ट्रेलियन के जो बैटिंग है अभी भी डाउट है बट अभी जाके मतलब फाइनल में सुधारने का कुछ नहीं है जो है उनको लेके ही खेलना पड़ेगा Okay, I think we've already reached the 30-minute mark. Let's get a few predictions in, guys. And let's focus on why not Virat Kohli and Mohammad Shami. So let me start with you, Sunny. Keep it short and crisp. Sunny, Virat Kohli, I know you're a Viratian, Sunny. विराट कोहली कितना रन मारेगा, क्या आज विराट कोहली शतक मारेगा दोबारा, और कौन लीडिंग विकेट टेकर होगा इंडिया का? कम ऑन सनी, मेक इट क्विक. अंकित अंकित विराट कोहली आज एक और सेंचुरी मार रहा है और आज जैसा भी सुशांत ने बोला है तो ये सिराज आज विकेट टेकर होंगे लीडिंग देखना तो दैट्स माय प्रेडिक्शन एंटी क्लाइमैक्स होगा अगर अश्विन आता है, सिराज नहीं खेलता है. Right. Sushant, I'll ask you the same question, Sushant. Who is the leading run getter today? Who's going to take most number of wickets today? And what are the percentages Australia and India win? Sushant. I I think let's go with the run maker. I believe let's say let's be honest. Rohit Sharma. Okay, Rohit Sharma. and You're being wicket taker honest, of course Sushant. Shami. Wicket taker Shami My सबसे ज्यादा Shami. होगा. You're playing it safe. my You're My playing it take safe, is right? Shubman Gill. Shubman Gill. Shubman Gill will be the highest run scorer today because it is his home ground, IPL home ground, and he has not played that impact innings of this World Cup. He is due to play one of the impact innings, and I think this is the right And Rohit and Shubman Gill, both of them are due for a century, right? So you never Right. know. They may have saved the best for the last. Rohit has scored a century, but that day Rohit has scored. unfortunately couldn't do. Shubman is. Shubman Gill couldn't do. Like in the semi-final, he was about to get his century, and he was So playing maybe he really saved the well. best for the last. You never know. Best, I think, है ना? One, I think one he last will play dance. one One of the last dance. yes, yes. He will play one of the best knocks of his life, and he will actually उसमें वर्ल्ड स्टेज में आज डिक्लेयर मतलब कर देंगे कि मैं विराट कोहली के नेक्स्ट विराट कोहली सचिन तेंदुलकर हूँ. Yeah. That's very important. I mean, for his Yeah, career yeah. also, that's really important. Yeah. Yes. Yeah. So as you heard it, without a doubt, India start overwhelming favorites at the Narendra Modi Stadium today. There is also going to be a closing ceremony, guys. Stay tuned with India.com for all the latest on that. It's going to be a big day for Indian cricket, and hopefully we are going to win the World Cup for the third time. Thank you so much for joining me on Off the Pitch with Ankit on India.com. Stay tuned to this website for all the latest across sports. Thank you so much. Thank you. Thank you. थैंक यू Thank you for your अंकित time.